Good morning, class. Take out your exercise, beta. Hurry up fast. Take out your exercise. Sharp your pencil. We were doing punctuation marks. Now I explained you of chapter 21. First take out page number 98. Grammar book, chapter 21. Now I explain you what are punctuation marks. है ना? I explain in punctuation marks what are coming. Full stop, comma, question mark, semicolon, exclamatory mark. All these come. Okay. So let us start, beta. Return date. Return everyone. Today is 7 December. Write on the book. Okay. Now take out your exercise 1. Punctuate. Your page number 98. Okay. Punctuate the following sentences using capitals. Capitals means wherever it is necessary, the first letter should be capital. We all know that the sentence begins with capital letter and the proper noun, they begin with capital letter. Okay. So now let us start. Your sentence, see everyone. Lions, tigers, panthers and leopards all belong to the cat family. Okay. Now in this, see beta, lion, tigers, panthers and leopard. All these are from the, means you can say from the same category. सेम कैटेगरी है ना, सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं लेकिन सेम कैटेगरी है. यू नो द लॉयन इज द बिगेस्ट कैट. यस, जो कैट की कैटेगरी में आते हैं बच्चे ये. ओके. सो नाउ पुट कॉमा फर्स्ट. इन लॉयंस फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल. सो मेक द फर्स्ट लेटर कैपिटल. Then put comma. In lions, L capital. Okay, comma. Then write tigers, comma, because all these are from same category, and when they are in the same category, then before and what we use comma to show that see different options are available. It's not only one name. All are different name. Like suppose if I ask you how many friends you have, and in the friends you tell many names, then how you will differentiate one friend with another? Just by using comma. So lions, comma, tigers, then comma, panthers. Before and you will use comma. And leopards. Then use semicolon as to differentiate this much sentence with another. Just only a small gap should be given. Okay. Put semicolon after leopards. Then write there, all belong to the cat family, and then put a full stop.
After semicolon, write there all belong to the cat family and put a full stop. Return. Done everyone? Again I am repeating. Lions, comma, first L should be capital, then comma, tigers, then comma, panthers and leopards, then semicolon. All belong to the cat family and then full stop. ओके ऑल का ए स्मॉल आएगा बेटा, सेमी कॉलम के बाद नहीं होता, कॉलन के बाद में हम जरूर यूज करते हैं कि फर्स्ट लेटर कैपिटल हो सकता है. दैट्स फॉर द ग्रेटर पॉज. पॉज का मीनिंग होता है रुकना. ओके नाउ नेक्स्ट इज आई मेट योर फ्रेंड गोइंग अलोंग the road last night. Now in this see ये two sentence है. I met your friend, ठीक है, going along the road और फिर last night. ओके थ्री phrases को combine किया हुआ है. ओके first letter should be capital I. Another thing is I, wherever it is coming beta, it is always in capital. Okay, wherever you write I, it is always in the capital. Right there, I met your friend. बेटा nowadays ना कॉलन इज नॉट सो मच, आप कॉलन का इतना ज़्यादा यूसेज जो है बेटा एज पर अकॉर्डिंग टू प्रीवियस नाउ इट इज लेस. ओके सो आई मेट योर फ्रेंड, पुट अ सेमी कॉलम. डन. गोइंग along the road, going along the road and then put a comma. Written going along the road after semicolon. Then put comma, then write last night and put full stop. Then now see, Rohan, one of your relatives met me in Delhi last Wednesday. Now see, here proper nouns are there, that means special name. First of all Wednesday, day name is there. Then Delhi, it's a state name. And Rohan. Rohan is the name of a boy, special name. Okay. So how you will do? First Rohan, R should be capital. Now see, it's better combination of three more phrases. See, like Rohan, one of your relatives, okay, met me in Delhi, then last Wednesday. Okay, so what you will do? Rohan, see somebody is saying to Rohan na,
So likewise, Rohan, then put comma, and in Rohan R should be capital beta. Then one of your relatives written रोहन के बाद में कॉमा यूज करना है, देन लिखना है आपने वन ऑफ योर रिलेटिव्स. Then met me in Delhi. Then put comma. Then write last Wednesday. And put full stop beta. Done everyone? In Wednesday beta W should be capital. It's a specific day name. Okay, जैसे मंथ नेम होते हैं आपके नवंबर, दिसंबर. Okay, December. All these starts with the capital letter beta. The same way Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. All these starts with capital letter. Okay. Now, the next see. The teacher said, Delhi stands on the bank of Yamuna. Now see, these are the saying of teacher. डायरेक्ट एज इट इज़ यूज़ है, तो हम क्या यूज़ करेंगे बेटा? इन्वर्टेड कॉमा. क्या यूज़ करेंगे बेटा? इन्वर्टेड कॉमा. एंड बिफोर यूजिंग इन्वर्टेड कॉमा हम कॉमा यूज़ करते हैं. ओके, सो फर्स्ट दी टी शुड बी कैपिटल. द टीचर written everyone. The teacher said, written after the teacher said put comma, then do inverted comma starts. Okay, and beta Delhi is the state name, it's a special name, so D should be capital. And moreover, in inverted commas, the first word, first letter is always capital. Okay, whether it's proper noun or not there. First word, first letter should be capital. So write here, Delhi stands on the bank. Beta it's K. Okay, bank of Yamuna. Yamuna Y should be capital beta.
It is K beta. Okay. See, it's written K. So write there K. By mistake that was done. So do it K beta. Okay. Now, what is a mountain? Ask the teacher. Now, what is a mountain? This is the saying of the teacher. So again, see inverted comma start होंगे. बेटा whatever is said. देखो लास्ट में इन्वर्टेड कॉमर्स है ना. ओके. सो आप बेटा whatever is said, जो देखो लास्ट में जहाँ पे टीचर की सेइंग ख़त्म होती है वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स आएंगे और एक जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया है. ओके. सो व्हाट इज माउंटेन का W कैपिटल करो बेटा. Put question mark. It's a question. What is a mountain? It's a question. So put question mark. Then inverted commas close. Then ask the teacher and put full stop. ओके. आज द टीचर के बाद में क्या लगाएंगे. फुल स्टॉप. नाउ हिंदूज मुस्लिम्स Sikh, Christians, and Parsis all live together in India. Again I am repeating, Hindus, Muslims, Sikhs, Christians and Parsis all live together in India. See, what is Hindu, Muslim, Sikhs, Christians? All these are religion name. So, and they are the कॉम की एक कम्युनिटी की स्पेशल नेम है ना, गिवन है ना. तो इसीलिए बेटा फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा बच्चा सबका. हिंदूज का एच कैपिटल करो बेटा. और ये जो बेटा डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, हाउ वी विल मेक इट डिफरेंट बाय यूजिंग कॉमा. हम उसे कैसे डिफरेंट करेंगे. बाय यूजिंग कॉमा. So Hindus, put comma.
हिंदूज कॉमा मुस्लिम्स कॉमा एम कैपिटल करेंगे बेटा मुस्लिम्स का. ओके. देन 6 कॉमा एस कैपिटल करोगे बेटा सिख का. कॉमा क्रिश्चियंस सी कैपिटल करोगे बेटा क्रिश्चियंस का. देन एंड पारसीज का पी कैपिटल करोगे बेटा. ओके. देन पुट सेमी कॉलम टू मेक इट डिफरेंट कि ऑल दीज आर different religion name, and then what we have to say, then you can write. Okay, put semicolon, then write there all live together in India, and then put full stop. The sentences added end. The sentences come to an end. Okay, see why we use semicolon? टू शो डैट दिस मच इज़ डिफरेंट. ये ऑल लिव टुगेदर इन इंडिया है ना, दैट्स वाई. अगर यहाँ पे आपका ऑल नहीं होता ना, पारसीज लिव टुगेदर इन इंडिया, बस अगर ये होता ऑल नहीं होता तो बच्चा हम सेमी कॉलम नहीं यूज़ करते. ओके, सो पुट सेमी कॉलम, देन राइट ऑल लिव टुगेदर इन इंडिया. ओके, पुट फुल स्टॉप. Now, next is Renu said to Kamla, "How beautiful we look." Now Renu said to Kamla, बेटा ये उसके वर्डिंग्स है ना, How beautiful we look. सो जब हम किसी के वर्डिंग्स लिखते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स. एंड दिस अनदर थिंग इज, ये क्या है, हाउ ब्यूटीफुल वी लुक, ये उसके फीलिंग्स है, रेनू के फीलिंग्स है जो वो अपनी कमला को बता रही है ना. हो सकता है उसकी फीलिंग्स हो सकता है किसी और की नहीं हो. तो जहाँ पे हम फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, व्हाट वी यूज़ देयर एक्सक्लेमेटरी मार्क. व्हाट वी यूज़ देयर एक्सक्लेमेटरी मार्क. So first write, in Renu R should be capital and Kamla K should be capital because these are the special names of the person. So Renu said to Kamla, now write again, Renu said to Kamla, then put comma, Kamla again I am telling K should be capital, then inverted comma start, how beautiful we look, and put exclamatory mark. Because this is the feeling. Okay, so put exclamatory mark and inverted commas close.
Okay. Then now come to the last sentence. He was honest, sincere, hardworking and faithful. See beta, honest, sincere, hardworking and faithful. What are these? These are the qualities of a person. Okay. How to differentiate the quality? By using comma. Okay. So H capital, he was honest, comma sincere, comma hardworking and faithful. Then put full stop. Done everyone? So I will send you the image. If anyone has not done, then correct it. Okay.